in our studio, Rodney Coe and Imran Saeed Khan. Welcome to Power 99. Thank you, sir. Thank you. Dear viewers, Rodney Coe is the Vice President of S&W Seed, an Australian company working for Pakistan as well. And Imran Saeed Khan is also representing them here in Pakistan. Welcome, both of you, sir. Thank you. Thank you. As you have been working, Rodney, for this seeds are very important, particularly when it comes to Pakistan. It's an agrarian country, and all the time we have different type of problems and crises as well. And if we look at globally, there's a whole food crisis, and the seeds are sensitive as well. How you see work in Pakistan, and what are the areas where you put your services? Yes, well, I've been working in the seed industry since I was born, I guess. I was born on a farm, so we've been in the seed business for a long time and understand how critical seed is to farmers, and understand how critical quality seed is to farmers in terms of the seed will get there on time, it will germinate correctly, and when you grow it, it will have the right characteristics and the right quality when you harvest it. So I've been in many seed companies, and currently I'm in S&W Seed, and we work globally all over the place, but particularly in developing countries, Central Africa in particular, and China. We've done a lot of work there. But I've been working in Pakistan since the late 90s, and I love coming to Pakistan because I love the food so much. But we have worked with a number of distributors in Pakistan selling our alfalfa or lucerne seed for forage, our sunflowers for oil, and our sorghum seed for fodder as well. And we understand that all of those seeds are so important to the whole economy in Pakistan, not just farmers in general. It just drives the whole economy, and the farmers in Pakistan drive the economy. So we recognise how important it is to be involved, to provide quality seed on a regular basis, and in doing so provide what the food supply system needs right through Pakistan. So we are enjoying helping. Good. इमरान साहब, आप भी बताइएगा कुछ क्या? S&W सीड जो है वो हम काफ़ी सालों से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, और स्लोली हम लोगों ने मार्केट के अंदर अपना एक नाम पैदा किया है. उसकी बुनियादी वजह हमारी क्वालिटी है, और बेहतर जो है उससे रिटर्न्स हैं फार्मर के लिए. फार्मर जो है पाकिस्तान के अंदर हमारा सीड क्यों ले, उसकी वजह हमारी शायद क्वालिटी है, ज़्यादा वो टनेज देता है. सनफ्लावर के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर अच्छी पोजीशन पे आ चुके हुए हैं. ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है, और जहाँ तक हमारी फॉडर क्रॉप्स हैं, ये पूरी सप्लाई चेन का एक हिस्सा होते हैं फूड की. फॉडर जो है वो इंसान तो कंज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन जानवर कंज्यूम करते हैं, और जानवर जब अच्छा फॉडर कंज्यूम करते हैं, जिस तरह से हम कुछ यहाँ पे सोरगम उगाते हैं जो कि मीठी होती है और कैटल उसे बहुत पसंद करती है, तो ज़्यादा मिल्क देती है, ज़्यादा दूध अच्छा होता है, उसका प्रोटीन्स अच्छे होते हैं. उसके अलावा गोश्त उसका बेहतर होता है. फिर इसी तरह से अल्फ़ा है, ये हाई प्रोटीन क्रॉप है. ये पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होती है, और इसके सबसे ज़्यादा बायर्स मिडल ईस्ट में हैं, और पाकिस्तान से ज़्यादातर अल्फ़ा जो प्रोड्यूस की जाती है वो बेल्स की सूरत में बाहर जाती है. तो देखा जाए तो सीड की प्राइस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बेल्स जा रही हैं पाकिस्तान, उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि वो बेहतरीन प्रॉफिट्स होते हैं. तो इसमें हमने देखा है कि काफ़ी फार्मर्स आहिस्ता आहिस्ता इसमें आ रहे हैं. In this era of the climate change and environment sensitivities, these pesticides and all these things are very much, you see, people discuss about them. How you take it? How your products are, you see? Well, yes, with
the changes in climate, which have happened for many years, we've concentrated our breeding efforts on being consistent through environments. So if you grow our varieties one year, we don't want them to perform differently next year, even though the environment, the weather might have changed, the rainfall has changed. So we have done a lot of breeding work to give consistent performance, particularly under drought stress, particularly with pests. You know, we have a lot of disease resistance and pest resistance bred into our alfalfa. So farmers don't have to go and spray unless it's a real plague, if you like, you know, a real extreme pressure from insects. Maybe you have to spray then, but we have a lot of genetic resistance built into all of our crops. That's what we do in our breeding programs. We see Australia is very good in livestock as well. That's why you specialize in fodders and all these things? Yeah, I think that as a company we've decided that we focus on anything that an animal can eat to improve their performance, to therefore improve the farmer's profitability. Because as you know, protein in general across the world is becoming more and more in demand and more expensive. So if we can provide solutions for farmers where they get better yields and don't have to spend as much money on their protection of their crop, then we've succeeded, so that they can produce more beef, more milk, more meat in general. So that's our aim. If we look globally, there are the movements have started that you see more water consumption by producing big meats and all this. This is another area where people are, you see, thinking that we should start eating less meat. Yeah. Yes, we all have had lots of discussions around that with many people around the world, but I think the people around the world I talk to in general understand that we cannot feed the world necessarily on all vegetables or all of plant products, I should say. And also that we need to have animals for health reasons. There's a lot of data out there suggesting that meat consumption does provide a lot of health benefits in amino acids and things for people's health in general. And they talk a lot about these days about gut health, and a balanced diet is very important for that. So what we tend to do is try to reduce the inputs required for a farmer, and one of those main inputs is water. So we do a lot of breeding work in Australia, and we also have our cousin company in the US, and we do a lot of work on sorghum, on alfalfa and on sunflower to ensure that they have drought tolerance, but not only that they produce more grain or more weight of product for every millimetre of water used to make them efficient and make it more cost effective for the farmer. इमरान साहब, अभी आपके सामने इन दिनों बड़ा ह्यू एंड क्राई चल रहा है. हमारी गंदम ज़बरदस्त आ रही थी, आपने बाहर से इतनी ज़्यादा गंदम और इंपोर्ट कर ली. क्या हमारा सिस्टम है, व्हाट डू यू थिंक, और इसमें हमारे यहाँ का इसको रखने का क्या इकोसिस्टम है? और देखिए, रखने का जो हमारे पास सिस्टम है गंदम की स्टोरेज का, ये मैं अक्सर बात करता हूँ कि जो हज़रत हमारे नबी थे इसमें मिस्र में, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्होंने एक स्टोरेज सिस्टम डेवलप किया था गंदम को स्टोर करने का. वो सिस्टम आज से 3-4 हज़ार साल पहले शायद डेवलप किया था. हम उसी सिस्टम पे हैं, हमने उसको इम्प्रूव नहीं किया. दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी हुई है. आपको पाकिस्तान के अंदर ये इतना बड़ा काम है, इस या तो प्राइवेट सेक्टर को आप अलाउ करें या गवर्नमेंट उसमें करे. डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर हमारे पास जब तक साइलोज नहीं होंगे जहां हम गंदम को स्टोर कर सकें, जहाँ पे एक एक ग्राम ऑफ गंदम जो है वो अकाउंट फॉर ना हो सके, पिल्फरेज ना हो सके, या उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकें, तो ये इसी तरह चलता रहेगा. मैं एक फार्मर भी हूँ, अपार्ट फ्रॉम एक सीड कंपनी से हूँ. मैं भी इफ़ेक्ट होता हूँ प्राइसेस के साथ. लेकिन आपके पास गंदम की अगर स्टोरेज का हो तो अगर आज प्राइस डाउन है तो 6 महीने के बाद आप हो जाएगी, और 6 महीने के बाद वो फार्मर को एक अच्छी प्राइस दे देगी. लेकिन फार्मर के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, स्टोर नहीं कर सकता है.
वो बोरियों में रख के हुकूमत ले जाती है, उसके बाद वो जिस तरह की उनकी है ओपन एरिया में पड़ी होती है, उसके ऊपर तरपाल लगा देती है, साइडों से वो मिट्टी के साथ उसको बंद कर देती है। ये कोई तरीका नहीं है। दुनिया हंसती है इस तरीके के ऊपर, अब बहुत आगे चले गए, बहुत मॉडर्न हो चुका हुआ है। हम बहुत बहुत महंगी चीज़ों के ऊपर फजूल खर्ची भी कर देते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर स्टोरेज के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करे, ताकि अगर बम्पर क्रॉप्स हों किसी भी क्रॉप की, कोई भी वीट हो, कॉर्न हो, कॉटन हो, तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी तो हो ताकि हम उसको होल्ड कर सकें। ये एक स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास जो है वो क्वालिटी मैं समझता हूँ कि वो उस स्टोरेज कैपेसिटी से ना होना ही बेहतर है शायद। क्योंकि वो हम देखते हैं वो ऊपर तरपाल पड़ी हुई है और जी एग्जैक्टली। मैं अब वो एक बहुत पुराना तरीका था ना, जब वो एक दुनिया की आबादी जो थी आज से 3000 साल पहले कितनी होगी, करोड़ों में होगी। उस वक्त लोग कम थे, आपके पास गंदम भी इतनी आप स्टोर कर लेते थे। तो वो याद कुरान में भी आया है इसके बारे में, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ड्राउट आया था और उन्होंने मिस्र के बादशाह को कहा कि इस तरह से स्टोर बना लिए जाए। तो शायद हम वही टेक्नोलॉजी आज तक यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसको चेंज करना पड़ेगा। Rodney, when I was a child, I remember we used to grow wheat. We will keep some of the wheat for the eating purposes and some for the seeds as well. But now it's different. We have to buy the seeds. Yeah, well, there are advantages in buying the seeds simply because our quality assurance systems are constructed so that we have the highest quality seeds for every opportunity that a farmer has to plant that seed. So we harvest it under optimal conditions, we dry it under optimal conditions, and we store it under optimal conditions so that when it's ready to be planted, the farmer has the best chance that that seed germinates effectively. We also have seed treatments that mean that the pests don't attack the seed while it's getting out of the ground. So I think that's the advantage that a lot of seed you buy has. And also the genetic purity is maintained. So when you keep seed year on year, you're actually moving the product or the variety away from where it started. Each year it moves a little bit further from where it originated. And obviously where it originated is its most efficient point. So we have systems that we refresh seed genetically year on year and maintain that quality and purity every year. But this Monsanto has been criticized very much in the Europe, rather most of the area. You see, they've taken them away. So, are you different from them? We don't deal in any genetically modified crops. We only deal in GMO-free crops. And there's no reason actually that you can't keep seed from some of our crops and grow it again. Although because we use hybrid sorghum, which is where you use two parents to produce the seed, and hybrid sunflowers where you use two parents to produce the seed, you can plant that seed again, but it reverts back to either of the parents. So you get a field with some of this parent and some of that parent, so it splits. The reason you get have hybrids in the first place is to get hybrid vigor, where you get a 25-30% gain in yield simply because you've used that cross in the first instance. And if you keep the seed and then move away from that, you tend to lose that edge, so you're never going to get the same yields out of the crop. इसमें इस सारी जो सीड है, जो आजकल एग्रीकल्चर एक्सपेंसिव है, एग्रीकल्चर सस्ता नहीं है। दूसरा, एग्रीकल्चर टाइम बाउंड होता है। एक क्रॉप जो कि अक्टूबर नवंबर में आपने प्लांट करनी है और आपने हार्वेस्ट करनी है मार्च अप्रैल के अंदर, आपको डिसीजन करना पड़ेगा कि क्योंकि अब देखिए ज़राअत में ज़मीन जो है उसका ठेका भी बहुत महंगा हो गया हुआ है, पानी महंगा है, बिजली महंगी है, डीज़ल महंगा है, ये तमाम चीज़ें अब महंगी हैं। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने सीड जो है वो एक बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी का, एक बहुत ही बुरी क्वालिटी का आपने सीड इस्तेमाल किया, बाकी चीज़ों की कॉस्ट तो कम नहीं हुई, फर्टिलाइज़र भी महंगी है, आपने वो तो सारी चीज़ें डाल दी और अब आप कहें कि जी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, ऐसे नहीं होता।
complete ecosystem. जी उसमें पूरे सिस्टम के अंदर सीड अगर अच्छा नहीं है तो बाकी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है और फार्मर को रिटर्न्स नहीं मिलते. देखिए ये एक बड़ा आसान है कि आप जो है वो कहें कि जी ये सीड को हम गंदम के सीड को रख लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं. अब जो नए सीड आ रहे हैं वो आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. एक सिट्टे के ऊपर दाने कितने हैं, वज़न कितना होगा. एक एकड़ में अगर आपने 15 किलो सीड डाला है तो उसमें जर्मिनेट क्या 15 किलो में से 14.5 किलो कर गया. वो सिट्टा कितना बनाएगा. ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. और आजकल जो फार्मर अगर छोटा भी है उसके पास अगर पैसे नहीं है, मैं ख़ुद देखता हूँ, मैं फार्मर भी हूँ, कि जिसने भी अगर बहुत सस्ता सीड लगाया है उसको कुछ नहीं मिला. उसके बाद अगर वो रोता है तो वो उसका रोना बनता नहीं है. आपको सीड के ऊपर बीज जो है वो बहुत उसका एक इम्पॉर्टेंट दर्जा है. क्योंकि बीज अच्छा लगाया होगा, फर्टिलाइज़र भी दें, पानी भी दें, वो कुदरत मेहनत और एंग्रो यूरिया. तो वो जो एक था एंग्रो वालों का नारा, वो जब हमें बचपन से सुनते थे, तो भैया उसमें बीज भी है, कुदरत मेहनत बीज और एंग्रो यूरिया. तो अल्लाह मियाँ साथ हो, सारी चीज़ें मेहनत आप कर रहे हैं, बीज अच्छा लगाया हुआ है, तो फिर भाईजान आपको रिजल्ट मिलेंगे. तो अल्लाह मियाँ हमारे साथ हैं. हम देखें, आप देखें पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल लैंड. From north to the south we have a water, and this Indus, the marvel of the world, is going on, but still we lack a lot of things. आप बताएंगे हमारी रिसर्च, हमारी अपनी रिसर्च, हमारे अपने सीड बैंक, what is the problem? हम एक तरफ साइंस की मिराज को हमने छू लिया, वो पुर्जा क्रिएट करके, इस तरफ कोई काम नहीं. देखिए इसमें काम होता है, इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम नहीं होता है. बात ये होती है काम के साथ साथ आप क्या वो आप उसको, इफ़ यू हैव टेक्नोलॉजी, आपने सीड डेवलप कर लिया. NARC बहुत काम करती है. NARC में बेहतरीन दिमाग हैं. मैं समझता हूँ कि उनके पास बहुत अच्छा रिसोर्सेज हैं उनके पास. लेकिन क्या अब वो जो लोग साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक अच्छी रिसर्च करके एक सीड बना लिया, अब वो उसको कमर्शलाइज नहीं कर सकते. कमर्शलाइज करने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को दें कि भाई हमने सीड डेवलप किया, उसको कमर्शलाइज करो, उसको लेके जाओ, उसको फर्दर डेवलप करो, उसकी मार्केट डेवलप करो. अब NARC का काम मार्केट डेवलप करना नहीं है. PARC का काम, वो तो रिसर्च काउंसिल्स है ना, दे आर नॉट मार्केटिंग काउंसिल्स. लेकिन रिसर्च के नताइज तो सामने आने चाहिए. जी वो अनफॉर्चुनेटली नताइज अगर वो गुम कर दिए जाते हैं या अंडर द टेबल कर दिए जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ये एक अलहदा बहस होगी. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल सीड कंपनी से हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है विद द NARC, आई थिंक दिस अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन. पाकिस्तान फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट इज़ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन. एटलीस्ट दे हैव सिस्टम इन प्लेस. रेगुलेशन वो करते हैं, कोशिश वो पूरी कर रहे हैं. देखिए पाकिस्तान में सीड हर कोई नहीं बेच सकता, वही बेच सकता है जो रजिस्टर्ड है. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. आप पाकिस्तान में के बारे में हम स्टीरियोटाइप्स को भी बात कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. हमारे पास कुछ इदारे अच्छे हैं, काम कर रहे हैं. अब वो इम्प्रूवमेंट उनके अंदर हर एक में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. प्लस ये कि क्या उनको वो सीड डेवलप कर रहे हैं, वो मार्केट तक पहुंच रहा है. अब ये एक अलहदा चीज़ है, वो मार्केट नहीं कर सकते, वो साइंटिस्ट हैं भाई. वो तो आप एक कंपनी बनाएं या प्राइवेट सेक्टर को कहें कि भाई हमने ये बना लिया वह सीड, इसको आप मार्केट करो. Rodney, as you are working with Pakistan, a very, I must say, a very difficult market when it comes to the whole ecosystem. I mean, you bring a very good seed, and there's no good irrigation system. There's no proper other things are not helping. What do you see? For example, take this irrigation system. Have you seen our irrigation system? Yes. I mean, Pakistan is developing its irrigation systems. I mean, historically you've used check border, what I call check border. I don't know what your flood irrigation. Flooding these check border areas, and it works, but obviously it's not as efficient. You know, the bigger farms in Pakistan I've seen now are importing pivot irrigators and installing those, and I think that's a good step. And also there's some drip irrigation going in, which is more efficient
both more efficient in the way they use water. Does your company guide on this area as well? Yeah, we give support around the world in terms of helping companies work with their new irrigation systems in our crops. Yes, we just like to see companies invest in irrigation systems where possible. But we understand that in these markets, there's a lot of farmers can't afford to invest in that significant change in their irrigation system. So we just try to support them in technical ways in suggesting how we can best utilise that water with our crops. Mm-hmm. Do you look into the diversity of our land as well? For example, in the north, we have the mountainous area, and you go down, we have the plain areas, and then deserts and all these things. So does your seed respond to all these kind of environment? Yeah, well, I mean, you've got traditional areas of growing things which are easier because people have been using those lands for hundreds of years, if not thousands, and the farmers know how to use those, and we just rely on their information, and sometimes we can suggest technology that can help improve the management of that land. But there are new areas opening up. We know that north of here that there's new areas of land opening up that are not traditionally areas that grow crops because they didn't have water. But now they're putting water in, and we have a lot of experience around the world in terms of utilising these new areas that are drier. We've done work in the Gobi Desert in China. We've done work in the other parts of the Middle East and Africa where it's traditionally been too dry to grow the crops, but now that they've got the technology to bring water in and find the water underground, they can grow these crops. So yeah, and a lot of our crops are suited to that. We have particularly our lucerne, they're suited to hot temperatures. Our sunflowers are the same. In Australia, we've done a lot of breeding work, and it's a similar environment to Pakistan and Australia, which is good because we can move our genetics, our varieties here, and they work because they're used to the heat. Whereas some of the other, companies in Europe and maybe even the US, they do their breeding work in a much more controlled environment, if you like. It's not as volatile and hot like it is at the moment in Pakistan. Well, it can be hot like this in Australia. So we breed for those environments, and that's why it's our varieties work here. इमरान साहब, सीड्स आप लेके आते हैं, you bring here. उनकी सीड्स की स्टोरेज के नहीं, कोई इशू नहीं अरेंजमेंट. अच्छा, ये पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर की स्टोरेज जो सीड कंपनीज हैं, दे गॉट अ प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम, और पैकिंग उसकी बड़ी रोबस्ट होती है, और सप्लाई चेन बिल्कुल महफूज है तरीके के साथ की जाती है, क्योंकि बड़ा महंगा होता है और कोई भी शख्स नहीं ज़ाया करना चाहता. तो इसमें कोई हमें अभी तक कोई भी नेवर इनकाउंटर्ड एनी प्रॉब्लम, अनलेस किसी जगह पे फ्लड आ जाए और वो सारा कुछ बर्बाद हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बेहतर है. Rodney, if somebody wants to know more about you or your seed company S&W, where they can see you, where they can contact you? Yeah, well, we do have websites naturally on swseedco.com.au. You can have a look on there. That's a very Australian website. We do sell a lot of pasture seeds in Australia that are not available in Pakistan. We work with distributors here on a very tight basis. We work with Commander Seeds, Maxim Seeds, and a number of other companies in the sorghum space. Seethy Seeds, for instance, and Green Gold, there's a number of them. So we partner those, and we rely on our distributors to give us information on the market, on what they require, and they also help us to trial seed. We bring in new varieties and we trial them with our distributors. So it's best to talk to the distributors where possible to get more information. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ बड़ी हैं, उसमें कभी आपका कोई उनमें नहीं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं हो सका. लेकिन मेरा ज़्यादा जो सीड ट्रायल्स होती हैं वो मैं NARC के साथ करता हूँ. मेरे इनके साथ ज़्यादा लिंक रहता है. I did try with the Agriculture University Faisalabad for seed testing. They have a beautiful lab, very good lab. University of Veterinary at Pattoki has best labs. Yes.
So I think Patoki is popular in the nurseries as nurseries, well. yeah, Patoki Agriculture University of Veterinary and Animal Sciences, their lab is, I think, world class, and they have very talented people working. So University of Agriculture, same. So I think پاکستان میں جو انٹلیکچوئل پول ہے وہ اس کی کمی نہیں ہے. We have very talented people. We are working on to the side کہ جہاں پہ پاکستان کے GDP کے اندر ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں. ہمارے سیڈ کی شاید اتنی قیمت نہیں ہے, لیکن جو اس کا پروڈیوس ہوتا ہے اس کی بہت قیمت ہوتی ہے. وہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے فارمر کی پروفٹیبلٹی میں اور فارمر کی جو ہے اوور آل ہیپینس کے اندر. دیکھو اینڈ آف دا ڈے میرے لیے ایک ہیپی فارمر از ویری امپورٹنٹ. اور اس پوری چین کے اندر ہیپی فارمر اسی وقت ہوگا جب اس کے پروفٹ انکریز ہوں گے. وہ میری پروڈکٹ سے انکریز ہوتے ہیں تو وہ اگلے سال اور لگاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے. اور یہی ایک کامیابی کی نشانی ہے. چاہے پاکستان کے اندر کوئی بھی کام کر رہا ہے, کارن میں کر رہا ہے, پوٹیٹو میں کر رہا ہے, تو وہ شاید اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے, لیکن جو اگر آپ دیکھیں اوور آل جی ڈی پی پہ امپیکٹ اس کی پروڈیوس کا وہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ مطلب ہے کہ اس کا کئی 100% ہوتا ہے. Thank you, Imran, and thank you very much, Rodney, for coming to the studio. Anything you want to add to this? Well, thank you for the opportunity. I mean, I always really enjoy coming to Pakistan and traveling around and looking at how our varieties and hybrids are performing. And as I think I said earlier, I really enjoy having the food everywhere, and the people are just so hospitable. It's just a joy to come here. عمران آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی سامعین, آپ نے ایک چھوٹی سی گپ شپ سنی, امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی. اینی تھنگ, اینی فیڈ بیک جو ہو